Assalamu alaikum and hello everyone. So I'm back again with a new episode of program Sochiye. So today the topic I chose is very interesting. It is about music and how music can be used for therapy. So we all have experienced that how music affects our mood. So when you listen to a pleasant music, you feel happy or kind of excited. But when you listen to a music that has some melancholic effect, you would definitely feel sad by listening to such kind of music. So in the field of therapy, how can we use music? So worldwide, music therapy is used, but I would not say that it is kind of used a lot. So this is the most unused area in therapy. So I wanted to bring it up and talk about it. So what are the effects basically that we can achieve through music therapy? It can actually reduce your physiological pain. It can, if you talk about psychological area, then it can reduce the stress. It can even lower your blood pressure. It can give you a better respiration. So overall, music can be used for healing. It can be used to treat people with different disorders, with different issues, no matter whether they're physiological or they're psychological. Okay, so now we have to know about when did actually music therapy emerge. So it emerged as a profession after World War II. And why was it used? It was used to treat the people who had psychological, emotional and physical trauma because of the World War. And it was very well received by the patients, and it was liked so much so that the doctors and nurses demanded that more people should be trained as music therapists so that more and more patients could be helped. We have an amazing guest, a musician and a composer with us to talk about this topic, and who better than the guest that we have invited. He is a founder member of Vital Signs and Junoon, and he's a co-composer of Dil Dil Pakistan. So let's welcome Nusrat Hussain, and yes, sorry, he is a commercial pilot as well. So let's welcome him. Assalamu alaikum, Nusrat Hussain. जी वालेकुम सलाम. Thank you very much. आपने invite किया show में. Ji, you're welcome. So I would like to know, what are you doing these days and where have you been? Why are you not seen in the music scene? And what is happening at your end? And do you even get time for the music or not? Actually, flying does keep me busy most of the time. Yeah. But I do, whenever I've done any flight, then I do get days off. And those days off are spent usually either giving a little bit time to my family, and then most of my time to music. Abhi main jis tarah se like I'm here in my studio. Yeah. And so yeah, I in fact when COVID started, Yeah. so I took a long leave, and in those days I was able to spend much more time here, just to stay safe. And those days I was able to get back to music a bit more, and did about 2 of my songs, which are in the process of getting recorded and mixed and mastered. That's But very yes, good it is. news. Yeah. It is not easy actually, but since it's not my full-time job, I do music for, just because it's my second passion. My first passion was always flying. The second is music. Yeah. So yeah. So, okay, the topic that I'm trying to cover is that, how music can affect our mood and how music can be used for therapeutic purposes. So, my question to you is that, can you tell out of your own personal experience that how has music been helpful for you, for your own ups and downs in your life? Oh yes, tremendously. I owe music a lot.
Back in 1980, when I did my commercial pilot, there was no job anywhere, um, especially in Pakistan. And those I was jobless for 8 years, uh, if I may say so. Yeah. And Okay. those eight years, music was able to keep me sane and engaged, and it helped me keep my mood, you know, alleviated. And Right. yeah, those days were tough, but music played a big role in helping me pass those 8 years. But then, as you may know, in those 8 years, then I formed the band Vital Signs, and then Yeah. Little Pakistan happened. So it was all in fate when you Right. think about it now. Right. Yeah. Exactly. So, all right. So, I would like to know what do you think about therapeutic power of music and why it is not actually recognized not only just in our country, but if you see it overall, the this side or this form of therapy is not very well recognized or very well used. So, I want to take your opinion on it. You are absolutely right. Unfortunately, a lot of research has been done about music and its the power of uh, music is the universal language of emotion. We all know Yeah. that Yeah. it doesn't have any language. Exactly. But unfortunately, even in the West, even though they have done a lot of research and they are very serious about it, but Yes. still there's still a general lack of awareness. Exactly. Hence, it's just not used. But there are indications and solid evidence that it can be very helpful, Yes. especially in memory recall in patients of dementia, Wow. Alzheimer's, Yes. Yes. even people who are undergoing chemotherapy. While they Absolutely. are undergoing that, if their choice of music is played, it's less painful for them. The whole process of being injected with chemicals and everything. Yeah. But yeah, it's very unfortunate that it's not recognized and used as often as it should be. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप बताएं कि कोई एविडेंस अगर आपने रिसर्च किया हो या आपकी नॉलेज में हो बिकॉज आपका इस फील्ड से ताल्लुक है कि जहाँ यू कैन सी देयर इज अ कनेक्शन ऑफ म्यूजिक टू मेमोरी. एक्चुअली मैं शुरू कर सकता हूँ यहाँ से कि आपको याद है बचपन में जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं, माएँ जो होती हैं वो लोरी सुनाती हैं, लल्लाबाइज. या तो इमेजिन करें कि उस टाइम से एक जो माएँ जो सुनाती हैं बच्चे को, that is that is music basically. ट्रू. और बचपन से आपको वो सूद करती है और बच्चा जो है वो बड़े आराम से सो जाता है. So that is एक बहुत बड़ी इंडिकेशन इस चीज की है. Yes. सेकंड ये है कि जो व्यूअर्स हैं वो एग्री करेंगे कि फ्रॉम स्पेशली 12 to 22 इयर्स जो हमारे होते हैं बचपन के, उसमें जो हमारी अच्छी यादें जो होती हैं और जो सॉन्ग्स जो हम सुने भी होते हैं, लेट्स से पिकनिक के ट्रिप में जा रहे हैं, एक्सकर्जन में, या कोई शादी है जो कि जिसमें गाने कोई बहुत पॉपुलर गाना है, तो इवन दो आफ्टर 20, 25, 30, 40 साल बाद भी अगर आप वो गाना सुनते हैं तो वही मेमोरी इवोक हो जाती है. या दैट मीन्स वो एब्सोल्युटली. कहीं ना कहीं लिंक हुई भी होती है. ट्रू. आपकी मेमोरी अच्छी हो चाहे बुरी हो बेसिकली, या बट वो होती है. इट इज लिंक. या इट बिल्ड्स अ और कनेक्शन ये बहुत बड़ी बिटवीन. या ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि जो आप सॉन्ग सुनते हैं, गाना सुनते हैं और आपको पूरी मेमोरी और पूरा वो सीन रिकॉल. बड़ी डिटेल में याद हो जाता है. यस. दैट मीन्स के एक बहुत बड़ा इफेक्ट है आपकी माइंड में. और स्पेशली बाहर के जो इन द वेस्ट दे हैव यूज्ड इट फॉर ये जो डिमेंशिया वाले पेशेंट होते हैं, जो कि सारे उसके आपको पता है स्टेजेस होती हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो कुछ लोग जो इतनी हद तक उसमें डूब चुके होते हैं कि दे आर जस्ट लाइंग मोशनलेस और वो बस पड़े होते हैं. उनको भी अगर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हैप्पी बर्थडे की म्यूजिक लगाई. अब सारे हैप्पी बर्थडे की जो टिपिकल एवरीबॉडी कैन सिंग और तो वो सब बचपन से माइंड में होती है. राइट. तो वो पेशेंट्स उठ के बैठ गए जो कि बिल्कुल मोशनलेस पड़े हुए थे,
वो Wow. उठ के बैठ गए और दे स्माइल, यानी एक कनेक्शन उनको फील हुआ विद द वर्ल्ड जो कि टोटली Yes. डिस्कनेक्ट था। Yes. इससे इससे बेहतर और क्या हो बिल्कुल, सकता है एग्जाम्पल के बिल्कुल, एब्सोल्युटली, म्यूजिक जो है वो इतने डीप रिसेसेस जाके भी एक्टिवेट कर सकती है माइंड को या और मेमोरी। और एक और राइट, मैं इंस्टेंस बताऊं आपको, वो बहुत पॉपुलर हुआ था यूट्यूब पे ये वीडियो। एक बहुत ज़ईफ एक खातून है, ओके, ऑफ कोर्स उन्होंने पियानो बचपन में सीखा था, शी वाज अ पियानिस्ट, राइट, लेकिन अल्जाइमर में टोटली वो काफी लेटर स्टेज तक पहुंच गई थी। ठीक, ऑफ कोर्स शी कुड नॉट स्पीक और कुड नॉट टॉक, तो राइट, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स वगैरह ने उनको पियानो के सामने बिठाया और वो लेडी, उन्होंने कोई सिम्फनी जो पुरानी उनको याद थी, बहुत पॉपुलर, उन्होंने बिल्कुल नोट बाय नोट प्ले करी। ओके, वो YouTube पे है, इट इज सो वाह, इमोशनल कि आप उनको देखें कि वो एक द काइंड ऑफ हैप्पीनेस ज़ईफ खातून को जो फील हो रही है, या इट दैट्स इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आपको इतना अच्छा फील होता है कि यार देखें म्यूजिक ने इनको वापस खींच के रियल बिल्कुल, वर्ल्ड में लाया, शी वाज एबल टू enjoy that moment। absolutely beautiful example. So I will try जी and find the link, or you can suggest the link, and we'll link it with our video as well, so that people can प्लीज see. श्योर, आई विल डू दैट जी, डेफिनेटली। Thank you so much for this beautiful example. So my last question would be that आपको क्या लगता है, अब अगर हम अपने मुल्क के हिसाब से देखें तो हमारे मुल्क में कितना स्कोप है, अगर हम म्यूज़िक थेरेपी की बात करें, या फिर हम अगर ये बात करें फॉर दैट मैटर कि म्यूज़िक सिखाने के लिए कितनी जगह हैं, या आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं, डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ ये किया जा सके? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। आप देखिए हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में म्यूजिक का सब्जेक्ट है, लास्ट Okay. आई नो। या और लास्ट जब मैं छोटा था तो मैंने आई हैड डन सम रिसर्च, तो अब आई डोंट नो अबाउट नाउ, Yeah. बट पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी जो म्यूजिक एकेडमी है वो कराची में है। ओके, बट वहाँ पर भी आपको म्यूजिक सिखाते हैं, प्ले करना, ठीक। डिफरेंट सितार वगैरह, वोकल, जी, राग्स वगैरह, जी, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं कि म्यूजिक को स्पेसिफिकली सब्जेक्ट नहीं, यूज किया जाए या उसको लर्न किया जाए, Yeah. क्योंकि बाहर जो म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं वो दे आर लाइसेंस, दे आर Exactly. एजुकेटेड एक्चुअली, दे हैव Yeah. लर्न Yeah. कि कौन सी म्यूजिक जो है वो किस टाइम पे कितनी सुनानी है। Exactly. ज्यादा देर आप ज्यादा लाउड म्यूजिक भी नहीं आप हेडफोन पे इज नॉट रिकमेंडेड। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इट इज अ साइंस एक्चुअली विच इज, बाहर तो क्या बहुत कम वहां पर भी काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पता ही नहीं है लोगों को, बिल्कुल, दे बिल्कुल, हैव नो क्लू। या एग्जैक्टली, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या जरूरत है लोगों को कि एक तो म्यूजिक को एक्सेप्ट करें कि इट इज अ मीडियम बिल्कुल, जो आप में इमोशंस को उभारता है और डिप्रेशन दूर कर सकता है, एंजाइटी Yes. दूर कर सकता है, और डिफरेंट म्यूजिक आपको डिफरेंट मूड्स आपके चेंज कर सकता है। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़ में शुरू किया जाए बिल्कुल। म्यूजिक को, और स्पेशली कि उसकी ये जो फील्ड है टू बी एबल टू बी यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस, Yeah. स्पेशली जिनको मेमोरी लॉस हो रहा है, या जिनके मूड बहुत डिप्रेस्ड हैं, एग्जैक्टली, या एंजाइटी का मसला है उनको, बिल्कुल, तो टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इनकरेज हर यूनिवर्सिटी में म्यूजिक का सब्जेक्ट हो, और Yes, वहीं से इंसान absolutely. सीख के फिर इस फील्ड में जा सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। Thank you so much, Nusrat Hussain, for your time and for your, the kind of information that you have given with evidence is really, useful for us. But before going, I would want you to promise us to come again, so that we can take your time and you can sing few songs to us. That will have some therapeutic effect, and we can, really cherish that. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और Thank you. डेफिनेटली, और आपको ट्रीट ये मिलेगा जब नेक्स्ट मैं आऊंगा इंशाल्लाह, कि अपना ब्रांड न्यू गाना मैं आपको सुनाऊंगा जो Wow. किसी ने Yeah.
नहीं सुना होगा और आपके शो में इंशाल्लाह मैं प्रेजेंट करूँगा। That would be my pleasure, and I'm really glad that you took out some time because you have a very busy schedule and all. So I am really honored and humbled by your Thank you presence. so much. Thank you so much. My pleasure. I hope that you like the program and you like the different kind of information that you've gotten and authentic information from one of the pioneers of the music industry. Okay, so I want to clear that music therapy cannot be used as a complete treatment for any of the issues or for any of the disorders that we have talked about. It can be used as a part of multidisciplinary approach. So you can mix different kind of approaches depending on the patient's conditions. So I do not want anybody to assume that music therapy can actually treat completely an Alzheimer's patient or similar problems, whether they are health issues or whether they are mental health issues. But this has importance. This has a great role that can be achieved if we inculcate it in any form of therapy. So I hope you liked this kind of information, and I will see you all again and with some other interesting topic. So hope to see you again. Allah Hafiz.